Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Helawat, and we are studying about the chapter 21, Neural Control and Coordination. In the last module, dear students, we were talking about the transmission of electrical impulse. That is, how does information travels from one neuron to another. And so far we have covered that the neuron basically is made up of three parts. Okay, we know neuron basically is made up of three parts, right everyone? And these three parts, if we talk about, now see, if you look at the neuron diagram again, I am drawing it for you so that you can clearly remember it. Now first of all, the information is received by the dendrites. Okay, so this particular portion is referred to as dendrites. So the information that reaches to dendrites then comes to your cell body. Okay, this particular portion is referred to as cell body. Then this long part is referred to as the axon. So the information that reaches to dendrites then goes to cell body and then it goes to the axon. Now as it is traveling, the information is traveling in the form of electrical signals. Okay, so far we have discussed how these electrical signals are moving, right? How does electrical signals, they move in the axon part. Now as this information is traveling and finally it reaches the last part of the neuron, which is called the nerve ending. I hope you heard this name, nerve ending. So this particular portion is referred to as nerve endings. Okay, clear? So as the information reaches to the nerve ending, these electrical signals, they are converted into the chemical signals. Okay, because the two neurons, they are not in contact with each other. आपके जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. आप these nerve endings, they are not in contact with the next neuron. So there is a small space here which is called the synapse. So दो neurons के बीच में एक small gap होता है. That gap we call it as synapse. Okay, so the information will cross the synapse in the form of a chemical signal. तो आपकी जो nerve endings हैं ये आपके electrical signal को chemical signal में convert करती हैं ताकि वो chemical जो है वो message को एक neuron से दूसरे neuron को pass कर सके. Clear? So this space between the two neurons is called a synapse. So दो neurons के बीच में जो space होती है उसे हम synapse कहते हैं. So synapse basically is a functional junction between the two neurons. So दो neurons के बीच में जो space है, that is called a synapse. Just imagine, suppose this is your, just look at this diagram. This is your nerve ending of the first neuron. ये आपके nerve ending है और ये आपका second neuron का dendrites है. So दोनों के बीच में जो space है, that is called the synapse, or we can call it as synaptic cleft. What do we call it as? Synaptic cleft. So what is synapse? The space between the nerve endings of the first neuron and the dendrites of the second neuron. देखिए बीच में जो ये space खाली नजर आ रही है ये आपकी synapse है. So दो neurons आपस में joint नहीं होते, there is a small space between them and that space is called as the synapse. So the message has to be moved or passed through the synapse with the help of a chemical. The message will not pass in the form of an electrical signal. Clear? So on the very first part, as I told you, in the three portions, the dendrite, cell body and axon, your message will travel in the form of an electrical signal, but rest will have a chemical signal. So we can have two types of synapse as well. One is electrical synapse, second is chemical synapse.
So if the message travels in the form of electrical signal through the synapse, we call it as electrical synapse. And if the message travels through the chemical, then it is a chemical synapse. But rarely, dear students, in case of human beings, we rarely have the electrical synapse. We always have a chemical synapse. Okay, we always have a chemical synapse. So how does message passes from the first neuron, you can say nerve endings of the first neuron, to the dendrites of the second neuron? Now we need to understand this. Now this is your first neuron. Okay, this particular portion is a nerve ending. ये आपके फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है. ठीक है, क्लियर है? ओके, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, तो साइनैप्स से पहले का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक नॉब. क्लियर? और ये पोर्शन है आपका, दिस इज द पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज योर साइनैप्स. So this particular portion is called post synaptic neuron. So ये synapse से पहले का पार्ट है न्यूरॉन का, उसको हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, एंड दिस इज अ पार्ट आफ्टर द साइनैप्स विच इज कॉल्ड द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन. क्लियर? Okay everyone? So as I told you, the membranes of the pre and post synaptic neurons, they are in close proximity. So they are not joined with each other, but they lie in the close proximity. So दोनों पास पास हैं लेकिन दोनों connected नहीं है. ठीक है? अब क्या होगा? जो आपका प्री साइनैप्टिक पार्ट है, जस्ट लुक एट दिस प्री साइनैप्टिक जो मेम्ब्रेन है आपकी, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए. This portion. Now this pre-synaptic portion, it is filled with a fluid. Okay, it is a fluid filled. तो आपके प्री साइनैप्टिक ये जो पोर्शन है, प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक के बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ है. ठीक है, सो साइनैप्स इज फिल्ड विद अ केमिकल विच इज कॉल्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो फ्लूइड है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के बीच में, दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो आपके जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, that pre-synaptic membrane, it produces certain vesicles. ये vesicles produce कर रही हैं जिसको हम कहते हैं synaptic vesicles. Now these synaptic vesicles, they will fuse with the membrane of the pre-synaptic neuron. ये pre-synaptic neuron की membrane के साथ fuse हो जाती हैं and then they release the chemical into the synapse. ये आपके उस chemical को synapse में release कर देती हैं. सो वेसिकल्स जो है वो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में है. प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से वो मेम्ब्रेन प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती हैं एंड देन दे रिलीज देयर केमिकल इनटू द साइनैप्स. एंड दिस केमिकल विच इज रिलीज्ड बाय द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन इज रेफर्ड टू एज द न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, दिस रेफर्ड टू एज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज, you can say, you can have an example. It can be acetylcholine or adrenaline, right? The neurotransmitter, the chemical which is released into the synapse by the nerve endings of the first neuron. So पहला न्यूरॉन जो है वो अपनी नर्व एंडिंग से एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी acetylcholine or adrenaline. And this chemical will fill the space between the two neurons. Okay, जो स्पेस खाली है ये केमिकल उस स्पेस को फिल कर देता है. Okay everyone? Clear? Okay. So now you have this space gets filled with the fluid. आपका जो स्पेस है, देखिए, this particular space, ये जो आपका स्पेस है, दिस पर्टिकुलर स्पेस, इट गेट्स फिल्ड विद द केमिकल. नाउ इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम हाईलाइट करके देखते हैं. जस्ट लुक एट दिस. सो आपका ये जो हिस्सा है ये न्यूरोट्रांसमीटर से फिल हो गया है. क्लियर? सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर योर न्यूरोट्रांसमीटर इज फिलिंग द स्पेस बिटवीन
the first neuron and the second neuron. Now at this particular point, your electrical signal is being converted into a chemical signal. तो आपका जो electrical signal है वो आपका chemical signal में convert हो गया है, and this conversion is being done by the nerve endings with the help of the neurotransmitter. तो ये जो conversion है that is being done by the nerve endings with the help of the neurotransmitter will pass the message from one neuron, from the first neuron, to the dendrites of the second neuron. तो अगर ये chemical present ना हो तो मैसेज भी पास नहीं होगा. क्लियर? सो आपकी जो साइनेप्टिक वेसिकल्स बन रही हैं वो आपकी नर्व एंडिंग्स में बन रही हैं. जो फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स है वहाँ आपकी प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स बन रही हैं. ये वेसिकल्स के अंदर जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड दैट दीज वेसिकल्स दे विल फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक membrane and will release the chemical, and this chemical will fill the synapse and will pass the message from the nerve ending to the dendrites of the another neuron. Now let's see how information travels. So first of all, the impulse will reach the axonal terminal. आपकी जो impulse है वो axon terminal तक पहुंचेगी. The synaptic vesicles they will bind with the plasma membrane. आपकी synaptic vesicles है वो आपके plasma membrane से fuse हो जाएंगी. They will release the neurotransmitter. The neurotransmitter will diffuse through the synaptic cleft and it will combine with the receptors on the post synaptic membrane. वो आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो उससे कंबाइन कर जाएगा. दीज आर ऑल आई एम इंडिकेटिंग योर रिसेप्टर्स इन द डायग्राम, यू कैन लुक इनटू इट. सो एज द न्यूरोट्रांसमीटर इज बीइंग रिलीज्ड, द न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. Now this binding will cause the opening of the ion channels. जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर से, this will result in the opening of the channels. Okay, and opening of the channels will generate an action potential. Clear? And this action potential, it can be excitatory or inhibitory. ये जो action potential है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है. Means it can increase the transmission of message and it can decrease the transmission of message. So it has both the functions depending upon how much chemical is present. So it can be excitatory or it can be inhibitory. Now coming to homework, dear students, I hope so far that you've understood how does message passes from one neuron to the another. So in the first part, the message will travel in the form of electrical signals, and in the last part, that is your nerve endings, the message will travel in the form of a chemical signal, right? And thus the transmission of information from one neuron to the another is referred to as an electrochemical phenomena. Okay, it is an electrochemical phenomena. So dear students, first of all you will make notes of this topic, then you will read the page numbers 319 to 320 and you will underline all the important points in the book. You will prepare very good notes in your notebook, and if there is any doubt, anything that you feel that we need to discuss, you will contact me personally. Right everyone? So that's all for today. Bye everyone.